Okay, so let me start this group task now. And yesterday's group task, all I have given the feedback except I think 3 p.m. that I'll be sending soon. Otherwise, I've sent the audio feedback to all the other group tasks. So you'll be going through the task and then I'll be recording this and I'll going through this and give you the feedback. And at the end, I'll give the solution also for that. So let me bring it on your screen now, this task. And then we can give a couple of minutes and then we can start discussion on this. So is this visible to you? Yes, sir. Yeah. Yep. So you've gone through this now. Yes, sir. Yes, sir. So I'll be giving you sufficient time to discuss. What I want to know is, and I'll be going through your this entire recording to give you feedback. What I want is like, what solution you people are providing. What is your thought process? How you are reaching the solution? Whether you are listening to others or not. So there is no hurry. There is no requirement of any cross cutting. Listen to others very attentively and give your opinion to others. Hindi, English, anything will be done, right? There is no problem.
So now start the discussion. So thank you, friend, for giving me the opportunity to start the group topic. So we are a part of an NGO. So we have to eradicate the malnutrition program. So we are conducting some kind of a program in this means we are conducting some kind of a food program for them for eradicating them. Hello. Yes, you are audible. Go ahead. Yes, you are audible. For eradicating the malnutrition, we have arranged some kind of organization for giving them food. So because of some reasons, we have arranged for 100 people only, but somehow 200 people have converged there. So we have to make some quick plans so that we cannot also make them to mean हम उनको जाने भी नहीं दे सकते, हम उनको कुछ खाना खिला के ही भेजें. तो हमको कुछ ऐसा प्लान करना है कि हमको सबसे पहले इसमें हमको टीम्स डिवाइड कर लेनी चाहिए कि कुछ तीन टीम डिवाइड कर सकते हैं हम इसमें. जैसे जो एक टीम है जो कि क्राउड को संभाल रही हो, और जो दूसरी टीम है जो खाने पे ध्यान दे रही हो, और जो तीसरी टीम है वो कुछ खाने लेने के लिए जा रही हो. तो हम आई विल ओपन द डिस्कशन फॉर ऑल, सो यू कैन आल्सो yes, हम कैसा भी कर सकते हैं कि जैसे like we can ask the fellow NGO to send शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हैं और फॉर लॉन्ग टर्म में हम क्या कर रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म वाइज हम क्या कर रहे हैं, we should think the problem प्लान in hand, you know. सिंस वी आर वर्किंग इन एनजीओ, सो वी हैव सम बैकअप प्लान. लाइक अगर कभी ऐसा इन केस होता है कि मान ली 100 लोग का हम खाना बना रहे हैं बट 200 लोग आ गए, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी करंट सर्विंग है थोड़ा कम सर्व करके एट द एंड मीनवाइल टाइम में जो हम सर्व कर रहे हैं उसमें कोशिश ये करेंगे कि बैक साइड में कुछ अलग सा बना ले ताकि 200 लोग का सर्व कर सकें. Right. What we can also do is like we can हमें हर पॉसिबिलिटी देखनी है. we might be having contact to the other NGOs also. So what we can do, we can call them to send the backup food, and then after the ration is arrived, we can cook the food for the remaining 100 people. And here we can also हमें हर पॉसिबिलिटी भी कर सकते हैं कि राशन को प्रॉपर करें ताकि खाना जो हम लोग वहां से लेकर आ सके. हम लोग Right, and we can do that. Right? We can ask for the donation. We can do that, and also we can do that. One thing that the style said that we should split the team. They can donate the food and we can give to the needy people. Please speak one by one. I agree with your points. Donation, but donation is मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें शॉर्ट टर्म में अभी देखना कि हम अभी 100 लोग का सर्व कर रहे हैं बट 200 लोग आ गए तो हम डोनेशन हम लोग ये बैकअप हो सकता है ना कि एग्जांपल लाइक 20-30 people का भी अगर हमको डोनेशन मिल जाता है तो वो बैकअप ही हो जाएगा. हम लोग लोकल पीपल का मदद ले सकते हैं, वहाँ पे लोकल पीपल का मदद ले सकते हैं ताकि हम वहाँ पे खुद फूड हमको मिल सके. करने के लिए हमको एक टीम बनानी पड़ेगी. हमें हर आसपास के लोग होंगे उससे हम फूड बना रहे हैं या एक्चुअली फूड कैसे हम कैसे पैक करके ला रहे हैं. अगर हम लोग फूड बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ डिले कर सकते हैं अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन में. जैसे हम थोड़ा अगर हम 9 बजे से स्टार्ट करें तो थोड़ा डिले कर सकते हैं कि खाना थोड़ी देर बाद मिलेगा और उतने टाइम में हम लोग उसके अलावा हम लोग की जा सकती है कि खाने का हम लोग को परोसा रहे हैं तो उसमें कुछ जल्दी आ जाए जैसे कि खाना जल्दी फूड बन जाते हैं वैसे टाइप खाना बना सकते हैं. खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं. जैसे कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड है, टीम बना सकते हैं. हमारे पास शॉर्ट Guys, I think we should divide into teams so that we can properly manage the task. टीम्स तो डिवाइड करनी है. टीम शुड बी डिवाइडेड. बना लेने से खाने के लिए अलग टीम टास्क रखेंगे कम करने के लिए और और मैनेज भी कर सकते हैं. बच्चे और बूढ़े लोग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर जो ऐसे जिनको बीमारी है उनको अभी के अभी खाना चाहिए क्योंकि सब हंग्री है, सबको अभी के अभी खाना चाहिए. Right. Ashutosh, I completely agree with your point. What we can do, we can ask the elders, senior citizens and the children to have the food. So and the adults can wait for the food. And in the meantime, what we can do, we can arrange the food for the family. We can also take the help of local people for getting the food. We can also take the help of. Okay. सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें I am agree with your point. तो राशन का इंतजाम हम ऐसे कर सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं उनसे हम रोटियां बना सकते हैं. अगर रोटियां हम बनाए तो रोटियां का इस्तेमाल हो जाएगा. और अगर दाल राइस चाहिए होगा तो हम जो राइस है वो राशन की जो गवर्नमेंट की दुकान है वहाँ पे हो इजीली अवेलेबल हो तो हम उससे इजीली परचेस कर सकते हैं. तो दाल राइस हमारा इजी से कुक हो जाएगा और रोटियां हम
आसपास के जो लोग हैं हमें डोनेट करते साहिल, आई एम एग्री विद शॉर्ट टर्म योर में पॉइंट। जल्दी जैसा कर आपने सकते हैं कहा वो कि हमें उसका फूड focus जो करेंगे, सबसे पहले जड़ी प्रोवाइड करना और भी चाहिए, दे हमें जो सकते हैं, फूड जो है सबसे पहले प्रोवाइड करना चाहिए ओल्ड एज पीपल को, एंड देन प्रेग्नेंट वुमेन या ऐसे कोई छोटे बच्चों को। लेकिन ये यहाँ एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक साथ फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो बाकी जो 200 लोग आए हैं उनके लिए हमारे पास खाना नहीं है, तो वो प्रॉब्लम केओटिक हो जाएगी। वो लोग करने लगेंगे कि हमें भी खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए। इसलिए हम ये कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं क्राउड को, ऐसे डिवाइड कर रहे हैं लाइक करना चाहिए। adults can wait while we are arranging for the backup. कि हम इन लोगों Yeah, के we'll हम contact टीम some में other डिवाइड कर NGOs सकते हैं अपने आप साइड को। में बिठा के रखा है कि भाई एक- हम लोग एक मिनट सर, बाद में खाना एक चीज ये भी तो होती है सर- ना कि मतलब मान लीजिए हमारे पास सर उतना जैसे हम utensils टीम्स भी में डिवाइड available कर नहीं लेते हैं है। अभी भाई हमारे को अभी गैस टीम्स भी चाहिए होती है, I अगर think हमें we can 200 agree लोग with Sahil here. We और should खाना जो 100 लोगों का Yes, खाना sir. हमारे Sir, पास है, उससे हम sir, क्या करेंगे पहले कि जो 100 we will लोगों का divide खाना है, our team. उनको हम धीरे धीरे परोसेंगे और ये ख्याल रखेंगे कि Sir, झूठा but- वेस्ट ना हो जाए। इससे हमें क्या होगा ना, कुकिंग के लिए या फिर अरेंजमेंट के लिए टाइम हो जाएगा। तो फिर ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोग धीरे खाना बनेंगे। नहीं, और but भी हमारे जो पास मेरे utensils फ्रेंड भी ने पॉइंट available ऐड किया था सेकंड कि जो भाई अगर हमारे pregnancy पास और utensils elders है, available नहीं है तो लोगों को हम हमने खाना बाद कैसे में बनाएंगे? priority में खाना Second, We बाद agree, में खाना we प्रोवाइड agree करने with you, वाले but Sir, first we of can all we also will take the have to help like of local government or local panchayati, local people. We can also take the help of local people so that we can Okay. acquire some kind of food from them, and we can acquire. I mean, we can assure them. We will also provide them some money afterwards, and we can also get some rice or dal so that we can quickly get some But rice हम to them. right, but right. हम I agree with you, totally agree with you, but agree with you. in some हम other कोशिश religions कर also रहे there हैं is आसपास के जो रेस्टोरेंट for होंगे, example we are having आसपास के जो team of रेस्टोरेंट adults, होंगे, right? अनिकेत, We are having आसपास के जो रेस्टोरेंट होंगे, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर उनके पास एक्सेस, क्योंकि यस आसपास के जो रेस्टोरेंट होंगे उनके पास एक्सेस में फूड होते हैं, तो वो तुरंत डिलीवर कर सकते हैं। तो हम पहले right, कांटेक्ट right. करेंगे कि I think so. Good. कांटेक्ट करेंगे आसपास के किसी एनजीओ को जिसके पास कनेक्शन हो रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो उनसे हम हेल्प लेके सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग फूड ले सके। तो हम लोग सबसे पहले हेल्प ले सकते हैं रेस्टोरेंट की जो आसपास में है। So और यहाँ पे for- हम एक पॉइंट में मिस कर for रहे हैं this- कि जैसे हमने सर पहले हमको जो फंड 100 भी लोगों के लिए एलोकेट करना सोचा पड़ेगा ना रखा सर, था, फिर जो सर 100 हमको लोगों फंड्स के भी लिए देना काफी पड़ेंगे मुश्किल वहां होगा। पर तो रेस्टोरेंट हमारा को देने के स्टाफ लिए, So पैसे देना don't call- पड़ेंगे। तो हमारा don't call स्टाफ me बढ़ाने वो के तो लिए हम क्या वो कर तो हम सकते हैं डोनेशन ले कि सकते जो हैं ना। 100 लोग हैं, अगर हमारे हम जो हाँ, NGO हमारा है, NGO है, अगर मतलब we might be जो having हमारे fund, right? मिनिमम Available फंड से with जो us. फूड हम मिल उनसे सके कह सकते उस हैं, पे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हम उनसे जैसे कह हाँ, सकते अभी तो हैं कि हमें वहाँ पे खाना available हो गया। तो खाना यहाँ पे अरेंज क्या करने में मिनिमम तो कॉस्ट प्राइवेट पे देनी आपको चाहिए। बल्क अमाउंट ऑफ फूड मिल सकता है। अब जो 200 लोग हैं उसमें से 100 लोग जो आए उन लोग को पहले हम लोग को जो पहले 100 मतलब 200 लोग आए उनमें से प्रायोरिटी तो अपन को देनी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ग्रुप्स को। Yes, Shobit, we discussed that, like we will be giving food to the like the senior citizens and the children, and the adults will wait for few time. In the meantime, we can arrange the food. And as Sahil said earlier, we will divide our strength into 2-3 teams, so that the one team will serve the food, other team will go for the backup, search for the backup. For example, like go to the restaurant, take the food, remain food from them. Second team will go to the neighboring area and ask them to donate food, whatever the food they have or the rations they have, we can collect from them. And the remaining team can contact to the other NGOs who are having the contacts to the different NGOs, or while they might be We arranging have the same nearby kind of dabas also, no? functions. So dabas also we can contact. We can also take the help of Sarpanch, the local Sarpanch. We can also take the help of Yeah, Sarpanch. we can take So the that help we from can- local authority, right? Yeah, Local local government government bodies bodies we can take help from local government bodies also. Yes, we are doing the like noble work, like people are Yeah. always So they eager are- to So they are willing to give the donate. So guys, और जो in लोकलाइज my में opinion, जो till now we have discussed the short महिला term, होंगी या फिर कोई भी outcome of our अगर मेन से work, जिनको कुकिंग which is आती है तो हम हम उनको पहले team इनवाइट कर divide सकते कर रहे हैं हैं, कि then आप फिर हमारी कुकिंग में मदद proper कर सकते distribution हैं। of food, and then फिर हम people को मैनेज करें कि किसको पहले देना है, और फिर in the meanwhile time हमारा जो दूसरी टीम है वो फोकस कर रही है कि बैकअप फूड Cooking. कहाँ से आ जाए। तो ये हमारे Right, शॉर्ट टर्म right. है। लॉन्ग टर्म में हम क्या करें कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी से हेल्प ले रहे हैं, अदर एनजीओ से हेल्प ले रहे हैं, और फिर आसपास के रेस्टोरेंट से हेल्प ले रहे हैं जो डोनेट कर सकते हैं। और अभी आजकल क्या हो रहा है, पैक फूड भी अवेलेबल होता है, तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना कि जो हमें पैक फूड सप्लाई कर सके। भाई पैक फूड आजकल जो जैसे हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो हमको फूड्स पैकेट्स में मिलते हैं, Ready to eat foods. I think we have to take ready to eat foods. We have to take foods we can. Yeah, very nice point, Rishabh. Yeah, very nice. Actually, some of the people will eat very less than food. For example, if the citizens, old age citizens who are crossing above 65, they are eating only less food.
well compared to the younger age, and the people who are below under the age of 15 years, they are also eating very less amount of food. If we consider on an average, they are that is the only point we have discussed. Yeah, Subramanian, like that is why we are providing the food to the senior citizens and children only, so that at least they will certainly get fed properly, and the remaining food we can distribute to the adult people. But we need to consider some of the people who are physically challenged also. We need to consider that people अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोकल दुकानें हैं, वहाँ से हम डोनेशंस के पैकेज फूड के रूप में डोनेशंस के लिए भी उनको मांग सकते हैं। जैसे कि बिस्किट वगैरह हो गया, वो अगर हम टेम्परेली जो यंग पीपल जिनको हमने बिठा के रखा है, उनको उस टाइम पे देख देंगे तो वो भी शांत रहेंगे। तो टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन। जो यंग पीपल है उनको हमारी टीम में भी ले सकते हैं कि भाई आप हमें अरेंज करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करिए। वो अगर ऑक्यूपाइड हो जाएगा सर, वी नीड टू फोकस ऑन देयर न्यूट्रिशन पार्ट आल्सो सर। Sir, we need to focus on the nutrition part also. We cannot give some kind of biscuit because their appetite should be different, because young people appetite is very different from one thing we need to focus on हमने 4 चीजें डिस्कस की। Manas want to say something. Manas wants to say something. करके बोलो तो फिर समझ में आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। Okay, guys, yes, guys, Manas want to add. Let me summarize. Yes. Okay, actually, I want to conclude this topic, but by the end of this discussion, we are in a way to continue. We do not need to. Actually, Subramanian, like Manas wanted to add something. कोई किसी को ऐड करना होगा तो कर सकते हैं। Yeah, please. Yes, I would like to invite Manas. Yeah, please, Manas, proceed. सो हम लोग जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट को भी हम लोग को देखना है। तो आई थिंक हम लोग आसपास के एरिया में अगर देखेंगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम लोग को मिल सकते हैं, मतलब इमीडिएट यूज के लिए, जो जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर करना है नहीं, मतलब डायरेक्टली हम लोग सर्व कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ भी मिला नहीं खाने के लिए तो फॉर द टाइम बिंग मतलब कोई फ्रूट्स मिल गया तो कोई वेजिटेबल्स मिल गया, उसको भी फ्रूट्स हो गया, जैसे अगर बिस्किट्स वगैरह हो गए, मान लो बिस्किट्स वगैरह भी हम दे सकते हैं, ड्रिंक भी मिल सकता है, चाय मिल गया तो एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। But we are one thing we are missing here. Here one thing we are missing. I want to add, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। Allocation हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास जितने सोर्सेस होंगे, हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बात दूसरे आसपास के जितने भी एनजीओ एंड ऑल उसको पहुंचा सकते हैं कि हमारे पास 100 लोग आज मतलब 100 लोग का खाना है और 200 लोग आ चुके हैं, सो दैट टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग कुछ लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। Actually, मैन पावर के साथ टेक्नोलॉजी का भी introduce some apps also by connecting the nearby restaurants. If they waste the food, it will beneficial by collecting the food from the nearby restaurants or nearby hotels also. Yeah, definitely. I totally agree with the Vikas point. You know, like we can take the help of technology. For example, we are like telecasting or broadcasting our social work, and we can directly like flash a news there. Like we were expecting 100 people, but unfortunately we can say like 200 people showed up. So if anyone wants to donate or come forward to the help, they can come. The help is always welcome. We can also take the help of online food delivery system. Like online Shobit, you are on mute. Would you like please unmute yourself? Shobit, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम से बेटर है कि हम ऑनलाइन उसको promotion we can also get a food in a quick way. I would like online food we can get a food by using Zomato or Swiggy. बार ऐसा होता है कि लोग फिजिकली टच ना करके घर वाले लोग हैं जो घर पे हैं, वर्चुअली आपको समझते हैं, आपके वर्क को समझते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम अगर हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज होगा तो हम उस पे लाइव जा सकते हैं और लोगों से डिमांड कर सकते हैं कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर सकेगी, और जिससे हो सकता है हमें जल्दी फंडिंग मिल जाए, मतलब फंडिंग इन द सेंस जल्दी फूड की अवेलेबिलिटी हो जाए, और तब तक हम बाकी काम कर सकते हैं। Actually, short term में तो हमारा like problem solve हो जाएगा। सोशल मीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। हम लोग डायरेक्टली अदर कनेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को but in villages some of the people are unable to use the social media.
in that manner we need to give the focus by distributing the pamphlets and by creating awareness among the students. If we give the awareness to the students tell their family about this program, and it is beneficial. And the one more thing is by distributing the pamphlets, it maximum we will cover all the village. I think we can also utilize the government summarize something. Most of the village students used to study. We can वहाँ पे हम प्रचार कर सकते हैं अपना promotion kind of thing. Just like which is being done in the election, we can like hire a vehicle. और अश्विनी ने एक पॉइंट मेंशन किया था. I think we cannot afford that कि hire vehicle. ये हम एक तो खुद भी donation से काम कर रहे हैं, तो we cannot waste that money in such kind of things. Cost हमें उसको effective भी होना proper utilize जरूरी भी है. करना Cost है. effective. Money का Actually, utilize we need to spread the awareness throughout the village, right? Throughout the neighboring area, we need to like spread the awareness. For that, we can afford a little bit of fund. We can allot the little bit of fund for the awareness. Because of this, we will get the donation, and ultimately it is going to help to NGO only. Yeah, I also think we should like consider a long-term we can allocate for promotion and all Manas, you that. want to say something? I think you mentioned the point that we also need to prepare for the future. Like future में ऐसा कोई problem फिर से आया तो हम लोग we should keep a stock like reserve. If we collecting little amount from each village, if a village contains approximately 500 villages, if we collecting less amount, also it will be beneficial for lot of members. I'm totally agree with this point. Okay, guys. Like we have discussed a lot of points, right? Someone should summarize and arrange the points now. Can I? Yes. So I'm summarizing the point. We have divided. Hello. I think yes, I think you should. Yeah, I think you should give like someone else opportunity. Like you started, so Manas, please, you can do it. Manas can take the. I want to conclude this topic. I want to conclude this topic. First of all, here we are divided the members in 3 categories, like old age, pregnant ladies, and children in different categories. And we need to give our first priority to the old age people and the pregnant lady. Then and next we need to think about the cost of food also. One of we conclude that we need to consider the cost of food also, because we need to provide nutrition food and also which is cheap in. And next we are also discussing that we need to consider some backup food also by collecting the food from restaurants and taking the help of local government, sarpanch, and the local villagers also. And later that we are using technology also by using apps, websites, and Facebook, Instagram. And the next thing, it is an online mode. By using offline mode also, we need to create an awareness among the villagers in nearby villages by distributing pamphlets and by providing campaigning and by creating awareness among the students. It will also beneficial. Finally, we want to serve the. I would like to add one point. Like initially, we have to divide team who can work on crowd management, proper distribution of food, proper management of what we are utilizing. Like अगर हमें कभी crowd funding करनी है, crowd से फिर जो भी market से हम utilize करें किसी hotel से जो भी food. So that case हमें team पहले बना के रखनी होगी, so that we cannot be in hustle and bustle at the mean peak of the time. Yes, Ashwini, you are right. Ashwini, yes, I also want to add one point. Like अगर in case हमारी सारी जो जितनी भी चीजें, जैसे हम लोकल लोग से हेल्प लेंगे, लोकल NGO से हेल्प लेंगे, लोकल रेस्टोरेंट से हेल्प लेंगे और लोकल गवर्नमेंट बॉडी से लेंगे, अगर सब चीजें अगर नहीं उस समय अप्लाई हो पाई, तो लास्ट ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल फूड लाइक आपका जो तहरी होता है वो सिंपल हम बना के उसको सर्व कर सके. और हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि हम लोग नो फूड वेस्टेज फिनोमिना पे काम कर सकते हैं. लाइक अगर हम लोगों ने 100 लोग के फूड तो बनाए होंगे तो एटलीस्ट वो 110 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के बनाए होंगे, तो हम लोग जिसको भी वो फूड दे वो ऐसा हो कि वो वेस्ट ना हो पाए.
Now anyone want स्टॉक्स to में भी रख conclude or सकते हैं, summarize? लाइक जो भी लाइक नेशनल स्टॉक में भी रख सकते हैं, तो ये हमें हम कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में कि हम हम स्टॉक लोग क्या कर सकते हैं, एट द लॉन्ग टर्म के कुछ लिए। 10 फैमिली या 20 फैमिली सकते हैं। Yes, Sohit, you are not properly audible. 20 फैमिली दे सकते हैं, वो 20 फैमिली को बोल सकते हैं, अगर हर एक 20 Sohit, you are फैमिली में not properly audible. हर एक Your फैमिली voice में is 5 breaking. Sorry, Shobit. Yeah, like internet issues seems there. Yes. Are you ready now for conclusion? Am I Yes, audible? Yeah, I think हम लोग क्या कर Sir. सकते हैं, 20 फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 फैमिली में हर एक Can I conclude? Yeah, Yes, please Vikash. go Yeah, ahead. yes, Vikash. Please Okay. proceed. तो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने हम लोग एक एनजीओ चला रहे हैं और हम लोगों ने फूड मतलब 100 लोगों के लिए फूड बनाया था, लेकिन 200 लोग आ गए। तो अब हम लोग के पास प्रॉब्लम आई है कि हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहला पार्ट ये है मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम अपनी टीम को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो क्राउड देखेगी, दूसरा जो अभी तुरंत खाने पे जो वो कर रहे हैं उसको देखेगी, और तीसरा जो फर्दर अपॉर्चुनिटी देखेगी। फर्दर अपॉर्चुनिटी मींस जो लोकल फूड लोकल पीपुल है उनसे हेल्प लेगी, जो लोकल एनजीओ है उनसे हेल्प लिया जाएगा, जो लोकल रेस्टोरेंट है उनसे हेल्प लिया जाएगा, देन आफ्टर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उनसे हेल्प लिया जाएगा। एंड कुछ चीजें और हम लोग इस ऐड करेंगे कि हम लोग नो वेस्ट फिनोमेना पे काम करेंगे, कि हम लोग ये चीज बिल्कुल मेंशन कर इस पे हम लोग काम करें कि हम लोग जितना फूड दे रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। एंड अगला पार्ट जो आएगा वो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें। टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि हम लोग एक एनजीओ है तो जरूर हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी होगी, तो हम उस पे लाइव जाके ये प्रॉब्लम बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम पता चले तुरंत और वो हमारी कुछ मदद कर सके। एंड लास्ट, अगर इन सब चीजों से अगर बात नहीं बनती है तो लास्ट ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि हम फूड तुरंत मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे खिचड़ी तुरंत बन सकती है, तो हम लोग लास्ट में अगर जल्दी अगर ये सब चीजें अगर फेल हो जाएंगी अगर हो गई, तो हम लोग 100 लोगों के लिए खिचड़ी का ऑप्शन रख सकते हैं कि उनके लिए न्यूट्रिशियस खिचड़ी बना सकते हैं। That all we have to do. Okay. Yes. Okay, now let me give you the right answer for this. Feedback I will give you after watching this entire video, and then I'll be analyzing and giving you audio feedback the way I gave you yesterday. Now let me give you the answer for this. What can be the best answer for this particular task which was given to you? So this was the task, and you need to read the task very carefully. You should not misunderstand the task. And it is like, you are creating some kind of community meal for people, and then unexpectedly more people came, and now what to do? That is a task. Now every group task may you need to think certain way. There's a way how you have to think of. This is how we can approach. You need to divide this entire problem into 2 parts. Some of you were making 3 teams, but I think it's in 2 parts. And to take care of each part, you need to create a team. Now, there are only 2 issues. Number 1, those who have already come, how to handle them. Number 2, we have shortage of meals, how to then arrange more meal. They are the only 2 tasks. Now, one team will take care of the ration which is left out and how to optimize that ration so that maximum people could be accommodated. And another team is going to arrange the additional ration from the outside, because we have less ration, that is clear. We were having for 100 people, 200 have come. Now, how to handle 200, number 1, and how to feed them. These are the 2 issues. Now, if I go to the first team, what first team can do is, number 1, it can optimize whatever is left with us. Ration जो हमारे पास है उसको optimize करना means कुछ इस तरीके से entire menu is to be redefined. For example, if you are giving 2 items, at least start with 1 item. Give 1 item to the people who have come. So this way you can entertain more people. You cannot make them eat because आपके पास ration कम है, so you cannot serve them. But at least you can start with certain things. Identify the priority group. I mean, some people cannot wait, like kids, old people, they cannot wait. So maybe first you entertain kids, old people and all, and make them eat so that they can go home happily. And then the crowd which has come, you need to make them sit and you need to make them eat also something, because आपको delay करना है थोड़ा सा.
तो डिले करने का एक पर्पस हो सकता है, many of you said okay let's give khichdi or something like that you said, so that simply meant was like let's start with starters and soups, starter और soup वगैरह देते हैं और वहां से start करते हैं. This is from where you have to start, and the team will also ensure that everybody is made to sit and they are served till the actual food arrives or our inventory is again replenished. Till that time we have to serve them. तो पहली टीम का काम लोगों को संभालना, उनको engage करना. Food तो we have shortage food, so but they should not realize that we have shortage of food. They are customers. You cannot make a customer realize that you are having some problem. That is the best solution. Now second team, what is to do is, second team is to arrange the ration. So ration is to be arranged and food is to be arranged, if not ration. So from where that is to be done? There are always community donors. Community donors means ऐसे लोग जो immediately help के लिए आते हैं, जो help कर देते हैं. You may be knowing because you are arranging this there, so you may be knowing that this guy can be of help. You need to basically approach such people. Then you need to go to ration shops nearby, and you need to take the ration from them at economical rate, not high cost. Economical rate because it's a community lunch you are throwing, so it has to be at economical rate. You need to get in touch with the regular supplier who is supplying to you and tell him that double requirement is there is a requirement of the double requirement. Inform him about the urgency, maybe he can help you. So जितने भी आपके contacts हैं या stakeholders हैं, those people whom you know who can help you out, you need to contact them. Top management, because you are working in NGO, so there will be top management. You need to keep the top management also in loop so that maybe they can also provide you some input. If ration is not arranged, then at the end you have to arrange the food itself. Maybe it is a little costly, but then you have to arrange it. During this entire process, the constraints which you have to work within those countries constraints are: the quality of the food cannot be compromised, nutrition cannot be compromised, and healthy meal and cost is not to be compromised. These are the constraints within which you have to work when you are providing your solution. So this was like a linear programming problem where constraint is given to you and you have objective function and you have to give your solution. Solution is like I have to feed 200 people. Constraint is quality कम नहीं होना चाहिए, food कम नहीं होना चाहिए, nutrition कम नहीं होना चाहिए, cost नहीं बढ़ना चाहिए. All constraints. And food you have to give, customer should be satisfied, and you have to give food to everyone. So how do you approach this entire problem? That was the group task. This is how you have to do it. So what did we learn in the decision making? We learned that with various stakeholders can be approached, we need to catch them. Second, customer, we cannot afford to dissatisfy the customer. Customer is to be entertained. That is another thing we understood. So and make the teams, you alone cannot do the work. Delegate the work, make people responsible, and proceed forward. This is what we learned in this entire thing. Right, so that's all from my side. Anything you want to ask or tell now? Any point from your side? And audio I'm sending yesterday's all 6 group tasks may except 3 PM. All the other group tasks have already been, feedback is sent to you on WhatsApp group. Today, whatever group tasks we are doing, you will get the feedback maybe today or tomorrow. Audio feedback you will get it, in which I'll give the feedback of each person. Listen to that carefully, and these all group tasks are getting uploaded on YouTube, so you can see and make your own self-assessment also, that okay, this is how I'm speaking, this is how I should have spoken. Right? Anything you want to ask or tell? Like in our group, हम लोग 3 ग्रुप बना दिए थे. फर्स्ट जो क्राउड मैनेजमेंट करेगा, सेकंड जो फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आपने कहा कि क्राउड को मैनेज करने के लिए पीपल का डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन किसको प्रायोरिटी पहले देना है, तो फूड मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट एंड द अदर वन इज जो अरेंज करेगा राशन. तो क्या इस तरह से भी जा सकता है ये डिस्कशन? You can do that. हाँ, you can do that 3 teams. That is also equally good. I mean, food खिलाना और crowd को manage करना, मैंने उसको merge कर दिया. You can make 2 teams. No issue in that. Yes. Sir, for HR allotments, आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? 10:15. 10:15. Okay sir. सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जो स्टार्टिंग में अगर हम ओल्डर पीपल और बच्चों को और जो प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर कोई बीमार लोग व्यक्ति है उनको खाना दे, और जो यंगर पीपल है, हेल्दी पीपल है, उनको अगर साइड में बिठाए
तो जैसे क्योंकि वो क्राउड है, वो साइड में बिठाएंगे तो क्या तो थोड़ा फार होगा ही। तो अगर हम उनको हमारे टीम के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे कि हम लोकली हमें कुछ मदद कर दे, तो वो भी एंगेज हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कस्टमर हो तो वैसे भी नहीं होगा। नो, दैट इज कस्टमर, और वैसे भी वो दे आर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दे कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। जब उनको पता चल जाएगा कि फूड की शॉर्टेज है तो वो कस्टमर चाहेंगे सबसे पहले उन्हें ही मिले। शुड नॉट गेट। और सर ये ग्रुप टास्क, जैसे कि हमें सिचुएशन दी है कि अभी 200 पीपल को हमें खिलाना है, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन में एक टास्क में बात हो रही थी कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो फ्यूचर का हमें इस टास्क में सोचना है या सिर्फ एक कंडीशन पे ही वर्क करना चाहिए? ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, जो उस टाइम पे इवेंट है उसको कैसे मैनेज करते हैं आप, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट एक्चुअली। इट इज नॉट फ्यूचर, इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर, इट इज लाइक व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल इट। दैट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली, प्रेजेंटली व्हाट यू कैन डू, एंड दिस इज हाउ यू हैव तो टू। सर क्या पॉइंट्स रखना मतलब इसमें वैलिड होगा कि हम फर्दर अगर कभी ऐसा आता है तो लॉन्ग टर्म पे क्या सोच सकते हैं? कुछ पॉइंट ये रखा तो हमने कि पर्टिकुलर एक लोकल गवर्नमेंट इंसिडेंस है बॉडीज ना, के हेल्प, अदर एनजीओस के हेल्प। no, this is a particular incidence and you have to meet it case to case basis. Case to case basis only you have to meet. So you have to only provide the solution to this problem which you came across, right? And he is only interested to know the approach which you take, not what is the solution, but approach which you take. What will you do? Practical approach आप क्या लेंगे इसमें? How you approach the entire situation? That is what he wants to know, whether you have that realistic decision making capability or not, right? Okay. Yes, sir. Chalo, then I take leave of you and provide you the feedback in your WhatsApp group, right? Yes. Thank you, sir.